So, hello everyone. I am going to try something new today. Uh, जैसे कि ता हिंदू है, ता हिंदू को रीडिंग करना सीखेंगे सबसे पहले कि मतलब कि रीड स्टार्टिंग करेंगे रीडिंग से। अगर रीडिंग करना अगर आ गई ना तो धीरे धीरे आधी चीजें तो पहले ही समझ में आ जाती हैं। फिर आधी चीजें समझने के लिए ना उसे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ता तो मतलब कि धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल। एडिटोरियल को रीड करेंगे, पर डे 2 एडिटोरियल करेंगे। ठीक है, तो 1 एडिटोरियल 1 वीडियो। शॉर्ट वीडियो में मतलब कि ये चीजें इजीली आपको भी बोरियत नहीं होगी, हमें भी बोरियत नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का है एडिटोरियल नंबर 1, ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मस्ट रिमेन द एक्सेप्शन नॉट द रूल। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है इसमें, द मेजोरिटी डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं आपको ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, द मेजोरिटी डिसीजन बाय बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिवर्स इट्स May 2025 order, which had stayed the grant of post facto environmental clearances. ठीक है, illustrates the difficulty of dealing with the seemingly irreversible consequences of a much abused law. The controversy is also about the form of the Environment Ministry's instruments that normalized those exceptions। ठीक है, अब कौन सा मतलब कि जो एक्ट है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड EIA notification of 1994 and 2006 are framed around prior environmental clearance EC, which means that large construction and industrial projects must not start work until an authority has assessed their consequences. Decision by the court, including Common Cause 2027 and Alembic Pharmaceuticals 2020, treated post facto EC as irpermissible where prior election commission was mandatory. Sorry, prior EC was mandatory. The order in May in Vansakti read this as ruling out post facto ECs altogether for such projects. The new majority does not say environmental clearance first is no longer the rule, but locates a narrow space for post facto clearances by relying on Alembic, De Somi, and others to allow regulatory regularization when considerable resources have already been committed. Usually with fines, this still means that the ministry can maintain EC first as the legal default and allow post facto clearances only in rare, highly constrained cases. In any case, the spirit of the EC regime remains ex ante। तो सबसे पहले आप एक 1 पैरा पढ़ेंगे, 1 पैरा को पढ़ के फिर उसे देखेंगे उसमें कहा क्या गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड पैरा पर। सेकंड पैरा में क्या, a clearance granted after construction has begun as finished can't replicate the EIA's rationale, which is the to make environment related decisions before the potential cumulative consequences are underway. Post facto clearance can only impose penalties, prescribe mitigation, or order closure or demolition. demolition
even if the judiciary permits such ECs in some circumstances. Now, the clearance will be remedial and sit uneasily with the structure of environmental jurisprudence in India since the 1990s. ठीक है? The majority is concerned about differential treatment of past and future violators is also understandable even if its remedy is not. One Shakti struck down the 2017 notification and subsequent Environment Ministry Office memoranda that facilitated post facto ECs, but it let existing post facto ECs stand. The majority treated this as discriminatory, which is fair but unequal treatment during a shift from a permissive to a stricter regime is to be expected. During regulatory housekeeping, its existence does not by itself require that an old route be revived. The court has also recalled the bar on post facto ECs and reopened the legal question, indicating that limited post facto regularization is not in itself untenable. In the end, the ministry must treat post facto ECs as exceptional, not least because they are inherently at odds with the legal framework. Any complaint about discrimination between past and future violators should be addressed by tightening legacy clearances, not by normalization post facto regularization. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब कि नहीं समझाए कि कुछ भी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मतलब कि शुरुआत में ना फियर होता हर चीज का, तो फियर एक को तो भगाना है कि मतलब कि जैसे अपन रीड करेंगे तो हल्का फुल्का तो चीजें समझ में आएगी ना, जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी फिर वैसे वैसे और चीज समझ में आने लगेंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। इनकी मीनिंग ना अगले सेशन में पढ़ेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।